Yes, so we are proceeding. बेसिकली ध्यान से करना, वो हिलना नहीं चाहिए क्योंकि पीछे वो डिसबैलेंस हो गया था सिस्टम. So we are discussing basically learning, and in that we have completed several approaches, and in that approaches that it's methods to understand, like we have discussed several methods of learnings. So first is verbal, non-verbal, psychomotor learning, then discuss program learnings, then mass learning, space learnings, and after that we have completed many more methods of learnings. So हमने बहुत सारे methods of learnings को डिस्कस कर लिया हुआ है. After completing that methods of learnings, so that so that we are going to discuss theories of learning, right? So in today's class, initially our discussion or our major studies will be based on the theories of learnings, right? So fix the heading in your copy, that is theories of learnings. So learning have lot of theory. So first theory that we discuss, classical conditioning theories. First theory that we discuss, classical conditioning. First is classical conditioning theories. After understanding of the classical conditioning, second is, that is operant conditioning. Operant conditioning theories. राकेश को निकले है ना, तो इंक इसमें है नहीं, ना इधर है, right? So operant conditioning. Then we discuss observation learning theories. Observation learning theories. Then we discuss insight learning theories. Insight learning theories. And then we will understand, that is latent learning theories. Latent learning theories. And then we will understand contiguity theories. Contiguity theories. So all these theories that we will discuss in the class, and I think any more are there? Any more? Only these much. है ना? Classical operands, insights, right? Broadly, as per our syllabus, these theories are, or you can classify these learning theories into three categories, right? The first category is, okay, it is not recording voice. Oh. Because the waves will be fluctuating. The fluctuating? It's not fluctuating. It's working or not? Not working. Audio wave should be
Okay. Right now it is okay. So, we are going to discuss theories of the learnings, and in the first learning theories, we will discuss classical conditioning. Second is operant conditioning. Third is observation learning. Fourth is insight learning. Fifth is latent learnings or latent learning theories. Then contiguity theories. Even these theories you can classify it in basic two manners. First manner is learning by association. First is learning by association. So few things we learn with the help of association. So that is learning by association. And after understanding the learning by association, then learnings by doing that we call them जो दूसरे टाइप्स का है लर्निंग्स बाय इफेक्ट्स इफेक्ट्स के बेस पे या कॉन्सिक्वेंसेस लर्निंग learning through consequences के through learn करना, that is the second way of learning. And the third way of learning is that is learning by watching others, learnings by watching others. So watching other, then we discuss learning by higher mental process. So learnings through higher mental process. So through a higher mental process that we also use for our learnings. So learnings by association, learnings by learning through consequences, learning by watching others behavior. So that learning by associations. Even there is others you can classify it, that is learning's concept given by behaviorists. So behaviorist view of learning is separate, and then you can also classify the cognitive psychologist views of learnings, then gestaltist views of learning is different from the others learning's perspectives. So that information processing is a part of cognitive. Information processing is part of cognitives. So that these are the way by which we learn. So here is the learnings by association. Basically, this is classical conditioning. Classical conditioning. Then learnings by operant conditioning. It is operant conditioning basically, that is through the consequences. Operant conditioning means learning by consequences. Then learnings by observations, that is watching others means observations learning. And then learning through the higher mental process, that is insight contiguity, right? That is insight learnings, contiguity learnings, and then there is other is what is there, latent learning. So these learnings are based basically on these principles. So इसी principles पर, yes Danish, good evening बेटी. So
that these idea and these classifications you can use in your learning things, है ना? So इसी को आप यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, to understand anything, to know better about these. हाँ ठीक है, लिखो। ठीक है। Can we proceed? हाँ, so first is what was the basic idea that were used by learning behaviorist also, क्योंकि क्लासिकल लर्निंग्स और ये सब behaviorist है। So behaviorist है, start first from behaviorist, heading बना लो, behaviorist views of learnings। बिहेवियरिस्ट के जो व्यूज थे लर्निंग के, सबसे पहले वहां से शुरू करो और प्रोसीड करते हुए आगे मूव करते हुए चले। सो बिहेवियरिस्ट व्यू ऑफ लर्निंग was basically focusing on SR conditioning, means stimulus and their responses. Stimulus and response conditioning principles used by them, right? So SR conditionings are used by them. Behaviorist SR means stimulus and response. So here is environment. Environment play a significant roles in our behavior developments. So this is also called environmental determinisms. Means if you are in the eastern environment, your behavior will develop according to eastern cultures. Like in the eastern cultures have high morality, eastern cultures have lot of values and respect because of they have used civilization and traditions. Whereas in the Western cultures are basically nuclear families, there is capitalistic society, their observations, their way of learnings are different. And most of the Western societies are developed societies, so their learning pattern will different because of their environment. तो जो माहौल मिलेगा उसी माहौल के अकॉर्डिंग ही तो डेवलप होंगे। मीन्स इंडिया में रहेंगे तो इंडियन नेम ऑटोमेटिक पैदा होगा, दैट इज मेवालाल, मिठाई लाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट हैपन। एंड इन द वेस्टर्न सोसाइटीज योर नेम विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इंडिया में तो नाम गॉड के नेम्स ज्यादातर पड़े हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द नेम्स एंड जो फीमेल्स नेम टेंपल से ज्यादा लिए जाते हैं, ज्योति आरती पूजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। एंड ब्यूटी से रिलेटेड चीजें ज्यादातर नाम्स नेम में कंसीडर हो। ईस्टर्न कल्चर्स एक रिलीजियस सोसाइटी, तो रिलीजन का एसोसिएशन विल बी स्ट्रॉन्गर। इवन एनी साइकोलॉजिस्ट और इवन साइंटिस्ट वो लैब में घुसने से पहले उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है, यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बिहेवियर को इतना स्ट्रांगली कंडीशन कर लिए कि वो इसरो में भी काम करेगा तो भी वो गॉड को ब्लेस करेगा कि चलो मेरा मिशन सक्सेस हो गया। इवन ही नो दैट ही हैज स्टडीड द एंटायर स्पेस एंड यूनिवर्स सिस्टम्स, बट फिर भी उसके अंदर रिलीजियस फेथ इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग
मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो बिहेवियर्स का क्या पॉइंट था? आवर बिहेवियर शेप्ड बाय environmental factors. Our behavior shaped by environmental factors या environmental components. This approach is basically teacher-centric approach. Why this teacher-centric approach? Because this approach believes that our behavior, nature is the best teacher. So nature is the best teacher. And behaviorists ignore the importance of covert behaviors. Covert means अंदर के behaviors को कुछ भी इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। बिहेवियरिज्म तो पढ़े हो, उससे कनेक्ट कर लेना कि बिहेवियरिस्ट लोगों ने जीन्स को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इन्होंने कहा जो कुछ भी ह्यूमन बीइंग होगा, एवरीथिंग फ्रेम्ड बाय देयर एनवायरमेंट्स, सब कुछ उसके एनवायरमेंट से ही बन करके आएगा। इसलिए जो कुछ भी है ह्यूमन बीइंग, वो उसके एनवायरमेंट का ही बाई प्रोडक्ट्स है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। गॉट इट? तो बेसिकली अब बिहेवियरिस्ट लिखे, बिहेवियरिस्ट such as Skinner, Pavlov, Thorndike has propounded their own idea of learnings, So first is learning by association. Yeah, behaviorists use mainly three principles. First, learning by association, learning by consequences, learning by observations. This form of learning is the most common form of learning. This form of learning is most common form of learnings. Observation. Most common form of learning. And there is basic mental abilities are utilized to learn, right? और हमारी लर्निंग का 80 से 90% is learning by classical conditionings, by operant conditioning and by observation learning के थ्रू ही होता है। So first heading is classical conditioning theories. Classical conditioning theory was given by Pavlov, who was a Russian psychologist, a Russian neurologist. Given by Pavlov, who was a Russian neurologist. He belonged to Russia, and he has got Nobel Prize. He has got Nobel Prize for the
experiments on his dog. उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स यस उसने अपने एक्सपेरिमेंट अपने डॉग के ऊपर किए थे. सो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था? मस्ट नो. उसके एक्सपेरिमेंट्स जो भी थे, मैं वो एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता, एलाबरेट करता हुआ चला. देयर एक्सपेरिमेंट्स, हाँ, their experiment was basically on his dog, right? तो उसके पूरे समझो. He said that initially, if there will be any stimulus, or that is there is any original stimulus, that is original stimulus, original stimulus will create some response, right? So original stimulus create some response. यहां पर वो कुछ ना कुछ response produce करेगा, right? And after that, with the original stimulus, Pavlov has connected a new stimulus, so that new stimulus with original stimulus, there will again produce some response. Note down them, right? So original stimulus will produce some response, and new stimulus will use as substitute with original stimulus, and that will produce also a response. कौन सा? Original stimulus. Original stimulus will produce some response, and new stimulus new stimulus provide as a substitute with original stimulus, so that will again produce some response. इससे भी response produce हो जाएगा, that will produce again some response. तो उससे भी response कुछ ना कुछ produce होगा, right? So let's proceed them. Let's proceed. So what is here was actually there was a dog, and उनका अपना खुद का पेट था, और उसी पेट को उन्होंने फूड को दिया. सो फूड वाज यूसीएस. व्हाट इज अ यूसीएस? unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus has been presented by him. सो यूसीएस के साथ में, फूड के साथ में उससे उसको स्लाइवा निकलना शुरू हो गया. स्लाइवा हैज अगेन यूसीआर, that is starting to salivation, that is UCR. but later वो उसके साथ में बेल लगा देता है, बेल प्लस फूड. so bell is CS and food is UCS, that will produce UCR, that will produce UCR, unconditioned response. Unconditional response, UCR. UCR. So this was the experiment. So what is
राइट नाउ यूसीएस थोड़े से एक्सपेरिमेंट या यूसीएस क्या था या यूसीआर क्या है, वो सारे टर्मिनोलॉजीज अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे, so that will helpful to understand the entire concept. Even this theory has been asked by यूपीएससी several times, बहुत ज्यादा पसंद है, और जब कि हमारी भी पसंद हो जानी चाहिए। सो अभी हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, राइट। और प्रोसीडिंग में हम लोग देख लेंगे एक एक चीजों को, और फिर इसको डिफाइन करें, हेडिंग बनाइएगा यूसीएस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूसीएस, राइट। सो यूसीएस इज a stimulus that can produce a response, unconditionally and naturally. Unconditionally and naturally whenever it is presented, whenever it is presented, full stop. For example, cutting off onion make you start crying, make you start crying, right? So that is UCS. Next is UCR. What is the next term is UCR. UCR is a response for which we do not need any previous learning. We do not need any previous learning. Either which occurs automatically, जो कि अपने आप होता है। UCR is automatic process, ये अपने आप होने वाला प्रोसेस। Then the next is CS. What is CS? हाँ, CS is a stimulus that was initially neutral in nature, was initially neutral in nature, क्या लिख रहे हैं आप? CS लिख रहे हैं ना? हाँ हाँ, neutral in natures, either was not capable of producing any response, later with repeated pairing with UCS, pairing with UCS, repeated pairing with UCS, it is able to produce UCR, and thus it can elicit the response
elicit the response originally meant for UCS only. Meet UCS only. Got it? So that is unconditioned response, और that is क्या लिखा आपने सी एस then CR. Next terminology is CR. CR. CR, the response we give to a conditioned stimulus. A conditioned stimulus because of some experience, is known as CR. Is known as CR. Is known as CR. So that CS is connected with CR. Right? So by this experiment, several laws were come out. इससे कई laws निकल के आए. जो पहला laws निकल के आया, that is law of acquisition. What is here? Several principles has come. इसमें से पावलॉन ने कई principles निकाले. Principle number 1, law of acquisitions. Acquisitions means हम कुछ behavior को acquire कर सकते हैं. Law of acquisitions means we can acquire some behaviors. हम कुछ behaviors को acquire कर सकते हैं. जैसे CS के साथ में यूसीएस प्रेजेंट किया गया तो सीआर प्रोड्यूस हो गया. मींस बिहेवियर कैन बी एक्वायर्ड. तो इसमें एक लॉ निकल के आया, दैट इज लॉ ऑफ एक्विजिशंस. तो लिखेंगे व्हाट इज द लॉ ऑफ एक्विजिशंस. लॉ ऑफ एक्विजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द रिस्पॉन्स right. In the most cases of classical conditioning, it is a gradual process. Most cases of classical conditioning, it is a gradual process in which CS acquires the capacity. Gradual process in which CS acquires the capacity to elicit CR. Elicit CR as a result of repeated with the US या UCS. When acquisition period is over, when acquisition
period is over, the response get firmly established. Response get firmly established into the behavior pattern, of the acquisitions. Acquisition of response is influenced by acquisitions of response influenced by several factors. Number one, practice. That is practice. Right? Acquisitions influenced by several factors. Number one, practice. Second, temporal arrangement of CS and UCS pairing. Temporal arrangement of CS and UCS pairing. हाँ, UCS pairing. CS means unconditional stimulus. CS and US pairing, right? तो इसकी पेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है. And these pairings are basically done by few rules and few laws. तो जो यहां पर टेम्परल सीक्वेंस बनाए जाते हैं, that the temporal sequence has been created by the some laws. First law is that is law of साइमल्टेनियस. तो ये एक साइमल्टेनियस अगर चीजों के साथ में कनेक्ट करेंगे तो वो उस बिहेवियर को जल्दी एक्वायर कर सकते हैं. सो साइमल्टेनियस अरेंजमेंट विल प्रोड्यूस मोर रिस्पॉन्स, है ना. ये इसको हम डिटेल में जाएंगे, बस साइमल्टेनियस अरेंजमेंट इज देयर. सेकंड अरेंजमेंट इज डिलेड अरेंजमेंट. डिलेड सीक्वेंस में चीजों को रिप्रेजेंट करें. थर्ड इज backward arrangement is there. Then fourth is trace. Trace means आपको stimulus are basically not presented. उसमें काफी देखिए क्या होगा. साइमल्टेनियस का मतलब यहाँ टेम्परल सीक्वेंस दो चीजों का है, फूड और बेल. सो फूड एंड बेल, देयर इज टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फूड एंड बेल. अगर फूड के साथ में बेल दिया जाए, दोनों एक साथ दिए जाएंगे, सो मे बी ह्यूमन बीइंग और डॉग जो पॉलॉक का था वो कनेक्ट कर पा रहा होगा या कर पाएगा कि बेल के साथ ही फूड क्यों दिया जाए. राइट. सो वो लर्निंग के लिए इफेक्टिव कम हो सकता है. देन डिलेट का मतलब पहले उसको बेल बजा दिया जाए, आफ्टर दैट फूड दे दिया जाए. सो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है. रेडी. एंड ऐसे पहले उसको फूड दे दो और फिर जाकर के बेल बजाए, सो हो सकता है कि उसका इफेक्ट पड़े. फूड और बेल किस लोकेशंस पर है एक्चुअली, इफ अनेबल टू नो, सो दैट इज ट्रेस कंडीशनिंग. राइट. तो ट्रेस कंडीशनिंग में पता नहीं, मालूम नहीं, बट वो बिहेवियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अब एक एक सिस्टम को समझो. इसमें कुछ एक सेंटेंस लिख लो. अकॉर्डिंग टू पॉलॉ, simultaneous trace conditioning, trace and delayed conditioning. Simultaneous trace delayed conditioning
were effective procedures to acquire learning, to acquire learnings, to procedures to acquire learning. तो ये लर्निंग को एक्वायर करने का एक इफेक्टिव तरीका है, राइट? एक्वायर लर्निंग्स. So this is the effective way to acquire learnings, है ना? अब आप एक एक करके समझना शुरू करो इसमें. फर्स्ट इज व्हाट? साइमल्टेनियस कंडीशनिंग. Simultaneous conditioning is there. Even you can understand by diagrams. जैसे हमने CS दिया और ठीक उसी समय suppose same times we are also providing food. बेल भी दे रहा हूं. CS भी CS का मतलब कंडीशन स्टिमुलस, एंड यूएस का मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस. तो जैसे हमने फूड दिया, दैट इज CS, और उसी समय ठीक हमने CS बेल बजाई और बेल के ठीक साथ में ही हमने फूड दे दिया, सो दैट इज UCS. दोनों एक साथ, और दोनों एक साथ ऑन कर रहे हैं. ऑन करने का मतलब देना शुरू कर रहे हैं, और दोनों एक ही साथ देना बंद भी कर रहे हैं. सो बोथ आर बेसिकली दोनों एक साथ में खत्म कर रहे हैं, फूड और बेल. सो दैट इज साइमल्टेनियस कंडीशन. जिस समय बेल बज रही है उसी ठीक समय उसको फूड भी मिले. CS मींस बेल एंड दिस इज फूड. वो फूड और बेल दोनों एक साथ प्रेजेंट हो. सो दैट विल तो लिख देना. Here large number of trial will be required as the order of US and CS. US and CS will not be known. Right? Right? Will be not known means animal will usually not understand why this bell is giving. Why bell और food दोनों क्यों दिया जा रहा है, वो कनेक्ट नहीं कर पाए, unable to connect, है ना? So not easy to connect, but maybe हो सकता है कि फर्क पड़े. Second conditioning is, that is what? Second conditioning is, that is delayed conditioning. Delayed conditioning means पहले बेल दे दी जाए तो CS बेल ऑन, और ऑन करने के बाद फिर इधर ऑफ. CS के थोड़ी देर के बाद यहां पर हम लोग हम तुरंत क्या प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, दैट इज फूड. UCS थोड़ी देर के बाद, सो US एंड दैट इज फूड, और फूड को हमने ऑन किया, फिर निश्चित तौर से उसके थोड़ी देर तक मिलेगा, सो ऑफ. सो दैट इज व्हाट, इसी को हम लोग बोलेंगे डिलेड कंडीशनिंग. There is delayed conditioning, right? Third is backward conditioning. Backward conditioning में क्या होगा जयप्रकाश? पहले फूड दे दिया जाए, मीन्स फर्स्ट वी प्रेजेंटेड US, फूड दे दिया गया, और फूड के थोड़ी देर के बाद देन
सी एस बेल प्रोवाइड किया है, फिर ये ऑन होगा और ये भी ऑन, यहां पर ऑफ कर दो, यहां पर। सो इट इज लेस इफेक्टिव विद द बिहेवियर्स, राइट। तो इसमें क्या लिखना, इन अ डिलेड कंडीशनिंग थिंग्स गिवन आर क्लियर इंडिकेटर्स, things given are clearly indicators of the relationship between CS and US. Clear conditioning या clear indicators, मैंने बोला clear indicators of the relationship between CS and US. CS and US. Getting? So what about the next? तो इसमें लिख देना, it is effective, most effective way of learning. It is most effective way of learning. ये लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है डिलेड कंडीशनिंग। जैसे आज मजदूर है, पूरी मेहनत से काम करे, फिर उसके बाद उसको रिवॉर्ड मिलता हो, ऐसे वो ज्यादा होगा अगर जिस समय उसको काम पे लगा उसी समय सैलरी दे दो, तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा as compared to other conditions. Next is, yes, backward conditioning. In a backward conditioning, first US has presented. In a backward conditioning, first UCS, US means first Ford had presented, then Bell has, then Bell, so next is there. So in a backward conditioning, this is not used, this cannot be used as, there is no incentive, as there is no incentive to produce CR. CR क्यों प्रोड्यूस करेगा, उसको तो फूड पहले मिल गया, तो वो क्यों मेहनत करेगा। सो दिस इज लीस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ एक्वायरिंग बिहेवियर्स। बिहेवियर को एक्वायर करने का, आपको यूपीएससी का रिजल्ट पहले दे दिया जाए और फिर बाद में कहा जाए पढ़ाई कर लो, तैयारी कर लो राजेंद्र नगर में, यू विल कम एंड देयर बोलेंगे क्यों आए सर। सो नो इंपॉर्टेंस है ना। Then the fourth is basically stress conditioning. Stress conditioning. In a stress conditioning, like bell has rang, जैसे बेल तो बजा दिया गया है ना, बेल बजा के यहाँ पर सपोज सीएस है, बेल ये ऑन कर दिया गया, और जब ये ऑन करके पूरी तरह से यहाँ ऑफ कर दिया, सो इसके ऑफ होने के बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है क्या, फूड। फूड को अब देखो, तो बेल तो पूरी तरह से बंद हो चुका है, देन उसको कनेक्ट करना है किसके साथ में, विद द बिहेवियर। टफ टू कनेक्ट देम। सो इसमें क्या लिखेंगे, इन द स्ट्रेस कंडीशनिंग different stresses are presented
to reach the US, even in this conditioning, even in this conditioning, when bell has rung after certain period of time, food has been present. So food has presented after certain period of time in this conditioning. तो फूड तुरंत नहीं दिया जाएगा, थोड़ी सी देरी के बाद दिया जाएगा. This is the first law of classical conditioning. क्लासिकल कंडीशनिंग में पहली बातें जो मैंने बताई, बिहेवियर को कैसे एक्वायर करते हैं. दिस इज द लॉ ऑफ एक्विजिशंस. एक्विजिशंस कम्स बाय द प्रैक्टिस. किसी चीज को रोज 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 बार बार करते रहें, ड्यू टू दैट प्रैक्टिस यू कैन एक्वायर दैट बिहेवियर्स. जैसे शुरू में टीचर पढ़ाती ए फॉर एवरीवन, नो, ड्यू टू द हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ द प्रैक्टिस everyone know that A for an. A second way to acquire any behaviors, that is temporal sequence. Temporal sequence means कुछ घटना हुई हो और ठीक उसके बाद वैसा ही हो जाए, so you may automatically connect with that events. जैसे एक मेट्रो के नीचे आपने देखा कि दो कपल फाइटिंग कर रहे थे, दूसरे मेट्रो के नीचे हो सकता भाई बहन फाइटिंग कर रहे हैं, बट वो डिले कंडीशनिंग हो गया, प्रीवियस रिस्पॉन्स से उसको कनेक्ट कर लेंगे और उसको भी बोलेंगे कि दे आर इवन आल्सो कपल एंड दे आर फाइटिंग फॉर द समथिंग्स. सो दिस इज द कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स दैट वी यूज, है ना. तो ये कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स हम लोग यूज करते हैं, दैट वी नो. देन द नेक्स्ट इज here is intensity. इसी में एक पॉइंट और आएगा, इंटेंसिटी. जिस चीज की इंटेंसिटी एक मैंने लिखा है होगा शायद, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एक्विजिशंस ऑफ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, यही बता रहा था ना. इसमें पहला मैंने बताया होगा प्रैक्टिस, सेकंड टेम्परल सीक्वेंस, थर्ड इज इंटेंसिटी. नोट डाउन, थर्ड इज इंटेंसिटी. Fourth is familiarity. हाँ, familiarity. Intensity of CS is relative to backwards intensity of CS is if high. Intensity of CS. CS if high, acquisitions of behavior will be faster. But if it is too much, it will create frustration. कोई चीज बहुत ज्यादा अगर आपको हो रही है, जैसे कई बार रोज रोज आपका टेस्ट होता रहे, so intensity of the test if it is higher, so that will not produces any behaviors. उससे आपको कोई भी behavior और response will not produce. तो किसी भी behavior से stimulus को intensity ज्यादा रखने से कई बार वो behavior acquisitions नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना. सो बहुत बार हम किसी भी behaviors को बहुत ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. सो नेक्स्ट इज, दैट इज द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एक्सटिंक्ट. हाँ, लॉ ऑफ एक्सटिंक्ट. हाँ, व्हाट इज फैमिलियरिटी, राइट? फैमिलियरिटी इज अ वे, या दैट stimulus which is too much frequently presenting in front of us, automatically we will connect with them. उसको हम खुद ही करें, अगर लिखना चाहे तो लिख देना. It can be affects conditioning familiarity में,
it can affect conditioning in a way that the individuals may find it very difficult to learn a new set of response that that they are familiar with, as producing a particular kind of response. जिस चीज से हम फैमिलियर हो जाते हैं, सो उसके लिए हम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग, लाइक फूड की भाषा में बोले, सो इन इंडियन वर्जन्स, लाइक इन इंडियन systems like wheat and rice is very popular, so that you know कि wheat and rice के हम कितने टाइप के यूजेस उसको करना सीखते हैं. Have you noticed? wheat and rice से हम उसको स्वीट्स भी बनाते हैं, फ्राइड फूड भी बनाते हैं, बेक्ड फूड भी बनाते हैं, एंड राइट एंड डीप्ड सिरम फूड भी बना लेते हैं. तो क्योंकि जो चीजें कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट हो जाएगी उसके लिए रिस्पॉन्स के मैकेनिज्म्स चेंज होने लगते हैं. वी मे रिस्पॉन्स इन अ डिफरेंट डिफरेंट वेज. हम अलग अलग तरीके से उस बिहेवियर या उस चीज के लिए रिस्पॉन्स करना शुरू कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं. So that is the way to responding. Then the next is law of extincts. Law of extincts. Law of extinctions basically proved by these experiments. Like you have seen, कल मैंने बताया था कि जो पाला ने बेल बजाया लेकिन बाद में उसको फूड नहीं दिया. सो अगर बेल बजा के फूड नहीं दिया, सो इट मीन्स उसके साथ में इनजस्टिस हुआ और वो धीरे धीरे स्लाइवा निकालना भी बंद कर दिया, बिकॉज वो रिस्पॉन्स डिक्रीज करना शुरू कर दिया. राइट. सो आप देखिए, जैसे देयर इज अ ग्राफ दैट यू कैन यूज टू रिप्रेजेंट आल्सो. देयर इज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज देयर, है ना. And in a second case, that strength of CR, strength of CR. So there is strength of CR. What is CR basically? इसमें क्या है? इसमें मैंने हाँ, इसमें जो इंटरेस्टिंग फिनोमिना या इंटरेस्टिंग बात इसमें ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीआर होगा, सीआर के लिए रिस्पॉन्स ज्यादा होगा. जैसे डॉग यानी बेल बजाया और बेल बजा के फूड नहीं दिया, फूड नॉट गिवन, पहले वो रिस्पॉन्स ज्यादा करता था, लेकिन धीरे धीरे कंडीशंस रिस्पॉन्स उसका डिक्लाइन होने लगा जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करते. ऐसा होगा. शुरू में रिस्पॉन्स, हाँ, even bell is ringing but food is not given, so CR is given, but that trials, as number of trials are increasing, there is increasing the number of trials, so that dog also understand कि नहीं यार ये तो बेल तो बज रहा है, क्या फालतू की स्लाइवा निकाल. it happened in the summer, so then we start to extinctions, बोलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो बिहेवियर्स हमारे बाहर निकलना शुरू हो जाता है. So here CS was presented, देखो CS was presented alone. Alone means only bell बजाएगा, फूड नहीं दिया जाएगा. CS was presented alone
over the number of trials, response tendency gradually decline. Response tendency gradually decline. Animal finally stop responding. Animal finally stop responding. Finally stop responding मतलब बाद में फूड दे दो, लेकिन कोई फर्क नहीं क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। सो यहाँ पर धीरे धीरे उसको पहले तो बेल बजते फूड के लिए खड़ा हो गया रेडी, बट एज ट्रायल्स विल इंक्रीज तो धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स रेट डिक्रीज कर जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली इट विल डिक्रीज, राइट। इफ लिखे इफ अगेन food has presented, then again behavior start to, तो ऐसा भी हो सकता है, there is also possibilities कि वो बिहेवियर फिर से वो स्टार्ट करना शुरू कर दे, that again start responding. There is also chances that start to responding. ऐसा भी हो सकता है कि जो ये बिहेवियर्स डिक्लाइन हो गया था अगले केस में जाते जाते ये फिर से इंक्लाइन हो सकता है। Inclinations in behavior is possible because of reconditioning. Reconditioning is how it's possible. Again, the stimulus has presented with conditioned stimulus, a natural stimulus, so that response will enhance. दोबारा behaviors निकल करके आ जाए. So this was law of extinction. Extinction मतलब जो हुआ उसे भूल जा. जयप्रकाश समझ में आई ना बातें? जो हुआ उसे भूल जा, मीन्स कंडीशनिंग हुई थी, अब कंडीशनिंग को भूल जा. बेल बजा के स्लाइवा निकालते थे, सामने वाली खिड़की का टुकड़ा रहता था, बट खिड़की बंद हो गई, चांद का टुकड़ा गायब हो गया. तो जो कंडीशनिंग थी वो डिक्लाइन हो गई. कभी ऐसा किया है आपने? ऐसे बहुत फनी फनी एग्जांपल्स हमारे जीवन में एडल्ट एज में देखने को मिलते हैं, राइट. It happened usually into the teenage में घर के आजू बाजू में कहीं कोई चांद का टुकड़ा है तो बच्चे वहां कलेक्ट हो जाते थे. और फिर बाद में जो चांद का टुकड़ा कहीं और बिजी हो गया तो फिर बच्चे भी कहीं और खेलने बिजी हो जाते. इज इट ट्रू? राइट. तो थोड़ा मस्ती के तौर पे बोल दिया मैंने, हो सकता है क्लास के लिए हार्ड हो, बट इट्स अ फनी फॉर मी. नेक्स्ट इज, तो देन द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ discrimination. Third law is law of discrimination. Law of discrimination. Law of discriminations. Discrimination. Law of discrimination. Third law is law of discrimination. Right? Suppose there is 70 decibels. How much? 70 decibels CS has presented. Decibel used for sound. So 70 decibel of sound has been produced, but no response is there. यहाँ पर no response.
Getting? But there is a food is given. Food has given, and response is there. Getting my points? It happened usually. This is the first case. But अब धीरे धीरे डॉग ने एक चीज को कनेक्ट किया फर्स्ट केस में कि दैट 70 डेसिबल फूड के साथ में डेसिबल साउंड प्लस फूड दोनों साथ में दिया गया तो वो रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करना शुरू कर सो सेम थिंग इज देयर बट इन द सेकंड केस in a case number 2 what is there in the case number 2 again 80 decibel has been produced how much 80 डेसिबल क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऐसी होती जो आपके माइंड को हिट करती है सो हाउ मच डेसिबल 80 डेसिबल ऑफ CS has been given 80 decibel of CS has given so that the fear or the running away due to that क्योंकि वो थोड़ा सा डर पैदा करे it happened in the experiment of Albert Bandura's that Watson's experiment वॉटसन के एक्सपेरिमेंट में बच्चे को 70 डेसिबल 60 डेसिबल का साउंड दिया जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट जैसे 10 डेसिबल बढ़ा तो अचानक डर जाता है बच्चा सो ड्यू टू फियर्स और ड्यू टू रन हो सकता है रनिंग करना शुरू करे एंड आफ्टर दैट इफ एनीथिंग इज गिवन राइट अब कुछ भी अगर यहाँ पर दिया जाना शुरू कर देंगे बाय द वे उसको फूड दिया कुछ और दिया सो अगेन स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड सो देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन द डिस्क्रिमिनेशन इज देयर इज अ 70 decibel sound which is not producing response but there is a 80 decibel which is producing response as a fear so there is a discrimination between two stimulus. The first stimulus is not producing responses and the second stimulus is producing responses. तो जब ऐसा होने लगे सो इसी को हम लोग बोलते हैं discriminations. So what is discrimination? Discrimination लिखो discrimination means when the same stimulus has presented right same stimulus has presented or the two stimulus has presented and presented or two stimulus has presented and animal have tendency to make a response to a certain stimulus and ignores others means फर्स्ट स्टिमुलस के लिए उसने रिस्पॉन्स लाइक लिख देना लाइक इन द above example for the first stimulus
animal is not producing any response, but for the second stimulus, it is producing, या that is producing response. तो वो रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है और पहले वाले में रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. सो मीन्स दैट एनिमल इज डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द टू थिंग्स. Like here is here is lot of animals means sometime animals. here is बहुत ऐसे एविडेंस देखने को मिले हैं जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता. सो दो स्टिमुलस के बीच में अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए एक एनेक्सियसनेस पैदा करता है, चिंता प्रोड्यूस करती है. सो इन केस इन द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इट प्रोड्यूसेस एनेक्सियसनेस मींस चिंता प्रोड्यूस करता है, एक डर प्रोड्यूस करता है हमारे मन में कि कुछ तो गड़बड़ हो गया. सो इसलिए हमें यहां पर जरूरी हो जाता है डिस्क्रिमिनेट करना. एंड इन द यूपीएससी आल्सो देयर आर द फोर ऑप्शंस. Two options are very much close to each others, even though we require discrimination between that topics, yeah, that options. Now the next is law of generalization. Next is law of generalization. Third or fourth law, that is law of generalization. Law of generalization. Fourth law. So what dog has generalized, or what animal or what we generalize as per our law of discriminations and acquisitions, we start to generalize also. Generalization is जब वो डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, है ना. सिंपल क्या हुआ कि वो दो स्टिमुलस के बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाए. जैसे कभी कभी साइकोलॉजी के दो टॉपिक्स आपको लगता है कि एक ही जैसी तो बात कह रहे हैं, बहुत समझ में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होता है, बिकॉज टीचर्स इस तरह से बता रहा होता है या बता रहे होते हैं कि वो बहुत क्लियर डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर पाता. उस कंडीशंस में आपके कॉन्सेप्ट्स बिग रह जाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ जनरलाइजेशंस. तो सिंपल लिखेंगे क्या, अ कंडीशनड रिस्पांस. हाँ, अ कंडीशन रिस्पांस is elicited by the stimuli, elicited by the stimuli that resemble the CS but were never paired with US. US means unconditioned stimulus. You can also write it is vice versa of law of acquisitions. Acquisitions के लॉस के ठीक अपोजिट में लॉस होते हैं. vice versa of law of acquisitions. Got it? Vice versa of law of acquisitions. Oh no, law of discriminations. Law of discrimination के ठीक अपोजिट में इसके रूप, बिकॉज जो बिहेवियर्स हमने एक्वायर कर लिया दोबारा उसी बिहेवियर्स को हम जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं. सो for this any example?
Law of generalization. Law of generalization is all general studies. Like just very simple. देखो, just if we have seen banana, potato, no, banana, mango, apples, so we have generalized. Rules are based on the law of generalizations, right? All the laws and principle are based on basically law of generalizations. तो ज्यादातर generalizations तो लेकिन generalizations happen just on the basis of physical characteristics है ना, like tribals mainly formed based on physical characteristics, types of temple, like we have three types of temples, I hope you know: Nagar, Desar and Dravida, based on physical characteristics. Based on physical characteristics, we generalized male and females, we generalized animals and living beings and non-living beings. है ना? So generalization is based on characteristics and emotions also. Emotions के बेस पर भी तो हम लोग लॉ ऑफ जनरलाइजेशन यूज करते हैं. Based on emotions we also generalize few things, तो वहां से भी कर लेते हैं. So that is law of generalizations. Then every learning will be involved, will not be involved discriminations. हर लर्निंग में डिस्क्रिमिनेशन तो कोई जरूरी नहीं है. Discrimination, but for discrimination, learning is required. Learning is required. Right? So इसी में आगे, so these are the basic four laws that is given by power laws and that we use. And one thing is also there: higher order conditionings. Higher order conditioning. Higher, HIR, higher order conditioning. A CS after acquiring the abilities means higher order conditioning we also do. लिख सकते हैं इसी में. In a higher order conditionings, CS after acquiring the ability of elicit the CR. CS after acquiring the ability to elicit CR may acquire reinforcing properties. May acquire reinforcing properties. For example, CS has used to elicit saliva. Buzzer, like buzzer used to saliva. Buzzer means bell. Right? Later CS will be paired by flashlight also. Flashlight से भी तो कर सकते हैं. Later it can be paired with flashing light also. लाइट जलते ही कई बार डॉग से रिस्पॉन्स हो सकता है. Next is, so this is the things, है ना.
So now wrote down the problems with the classical conditioning theories. What are the problems with classical conditioning theories? The first problems, right? First problem means in case of CR and CR means condition, stimulus, condition response, and UCS means unconditional. If the both magnitude are same, then definitely ये लॉ फेल हो जाएगा. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो मीन्स दोनों ही कंडीशन में साइबा उतना ही निकले, so that this law will be failed. Even जो पॉलाव एक्सपेरिमेंट था that was measured in different magnitudes. CS CR और UCR का मैग्नीट्यूड सेम होने पे ये लॉ फेल होगा. राइट, जैसे बोथ दोनों में ही अगर 90 डेसिबल, राइट, बोथ में ही एक ही रिस्पांस प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, सो इट इज डिफिकल्ट. ऐसा हो सकता है, तो लिख देना इफ CR इज UR, if CR is UR, their magnitudes should be similar, then the response is not easy to observe, right? But Pavlov has done with different magnitudes, means CR and UR का magnitude different रखा, but Pavlov has done different magnitudes के साथ में चीजों को रखा. Right? Stimulus substitution theory. Second drawback. Stimulus substitution theory right? Stimulus substitution theory said that clearly. Stimulus substitution theory, what it said? It said basically two things. If the pairing with the stimulus, एक स्टिमुलस का कुछ सब्स्टिट्यूट दिया जाए और सब्स्टिट्यूट अगर एक्साइटरी रहा, if it is excitatory, so then it works as a positive reinforcement. If it is provided excitatory substitute, like food के साथ बेल दिया गया, तो बेल was substitute, but if it is working as a positive reinforcement, then it is that is वो फिर एक excitatory हो गया. In the inhibitory situations, that basically what is there, so it works as negative reinforcement, right? So normally ये कहता है, this is the theory of stimulus substitution. So stimulus substitution, right, जो यहाँ पर dominance दिखाई पड़ता है, तो लिख देना कि there is a dominance of stimulus substitutions. During the substitution, of inhibitory,
that it has accumulated wood disparates, would desperate, spontaneous recovery, spontaneous recovery. So that is a spontaneous recovery. Right? Then there is other drawback, information expectation theory also. Information, other drawback, information expectation theory. Right? Information expectations, there is a two principle, that is acquisitions and extinction. uh, जो यहाँ एक्सपेक्टेशंस ये था कि उसको एक्वायर करने के लिए एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की जा रही है, या फिर इनहेबिट करने के लिए, या फिर एक्सटिंक्ट करने के लिए की जा रही है. तो इस बहुत कंडीशंस में ये प्रूफ नहीं हो पाता. एक्सपेक्टेशंस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत जस्टिफाइड तरीके से पॉलाव ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया. So लिख देना, it is not completely justified by the information expectations principle. Getting? So right? G? It is not completely justified by the information expectations theories. Because after the rest, you know, because after the rest, bad memories will erase. Bad memory will be erased. Getting? Next is there. What are its applications? What are its applications? Its applications are basically in behavioral changes, acquisitions of new behaviors, like teacher start to learn by the law of acquisitions, attitude formation and changes, एटीट्यूड बनाने में और बदलने में, formations and changes, like prejudice develop usually through the conditionings, like black peoples के लिए जो prejudice develop होता है due to the conditionings. So that is the Paula's entire journey. Even few other concepts are also there, like pseudo conditioning, so that we will discuss pseudo conditioning later. And there is higher order conditionings that we also discuss there, because some other keywords I mentioned that we will discuss later. So this was the theories, and in the next class, that tomorrow we will discuss that next theory, that is operant conditioning theories. So thank you those who are watching me online and those who are offline also. So tomorrow we will do next.